उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित और प्रतिबद्ध करती है कि हम समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचें और उसे विधिक ज्ञान दें एवं निशुल्क कानूनी सहायता दें। इसके साथ ही आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और अपना मोबाइल फ़ोन्स साइलेंट मोड पर डाल लें या उसे स्विच ऑफ कर लें। हमारे गेस्ट्स कुछ ही देर में हमारे बीच इस हॉल में आएंगे।
you all are requested to please keep your phone on silent mode or switch it off. We'll be starting with the function in a short while. हमारे गेस्ट वेन्यू पर पहुंच गए हैं, वो कुछ ही देर में इस सभागार में आ रहे हैं।
The moment is finally there when our esteemed guests will soon be entering the auditorium. Before we commence with the function, I request you all to kindly find a seat for yourself and make yourself comfortable. We'll be commencing the program shortly. I also request you all to kindly switch off your mobile phones or keep the same on silent mode so that there are no disturbances in between. Our esteemed guests have almost arrived and we'll be starting the function in a very short while. देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चे, हमारे बीच सभागार में आगमन हो रहा है माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी का, जो कि मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय हैं। आइए हम सब खड़े होकर करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। हम दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एवं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री सिद्धार्थ मृदुल जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यह हम सब के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है जब हम सब के बीच श्री अश्विनी कुमार एवं श्री ज्ञानेश भारती एमसीडी के वरिष्ठ ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। मैं इनका नमन एवं वंदन करती हूँ। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच सम्मानित अतिथि श्री हिमांशु गुप्ता जी, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टर हैं, वो भी मौजूद हैं। हम इनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।
मैं हृदय से स्वागत करती हूँ सभागार में उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण एवं सम्माननीय महानुभावों का। Since our esteemed guests have now arrived, we formally commence the function. To start on an auspicious note and to do the honors, may I now most humbly request Honorable Chief Justice, High Court of Delhi, and the other esteemed dignitaries to kindly light the lamp of wisdom and hope to invoke the divine blessings. I request the honorable dignitaries to come on to the dais and light the lamp. धन्यवाद सर। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं आप सबको इस कार्यक्रम की संकल्पना एवं आगाज की पृष्ठभूमि से परिचित कराना चाहती हूं। In a bid to stop, thank you. In a bid to stop sexual exploitation of children, which has time and again shaken the collective conscience of our society, and in deference to the desire expressed by the constitutional courts of our land, Delhi State Legal Services Authority decided to flag off the campaign in several schools of Delhi, where our resource persons taught children about good touch, bad touch, safe touch, and unsafe touch, and the provisions of the POCSO Act. Having thus given a brief background of this project, and without further ado, may I now like to call upon Shri Bharat Parashar, Learned Member Secretary, Delhi State Legal Services Authority, to kindly deliver the welcome address. Good morning, everyone. Honorable Mr. Justice Satish Chand Sharma, Chief Justice, High Court of Delhi, and Patron Chief, Delhi State Legal Services Authority, Honorable Mr. Justice Siddharth Mirdul, Judge, High Court of Delhi, and Executive Chairperson, Delhi State Legal Services Authority, distinguished Honorable Judges of High Court of Delhi, learned Principal, District and Session Judges and Chairpersons, District Legal Services Authorities, Shri Ashwani Kumar, Special Officer, Municipal Corporation of Delhi, Shri Gyanesh Bharti, Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Shri Ravindra Dudeja, Learned Registrar General, and Shri Kamaljeet Arora, Learned Registrar Vigilance, High Court of Delhi, Shri Manmohan Sharma, Learned Director Administration, Delhi Judicial Academy, Shri Himanshu Gupta, Director Education Department, Government of NCT of Delhi, Shri Anil Kumar Sharma, Chief Law Officer, MCD, Shri Vikas Tripathi, Director, Department of Education,
Government of NCT of Delhi, respected principals and teachers of different schools across Delhi, learned panel lawyers of MCD, dear legal aid counsels and paralegal volunteers, all the media persons who are present here, ladies and gentlemen, और प्यारे बच्चों, I, Bharat Parashar, Member Secretary, Delhi State Legal Services Authority, extend a warm welcome to all of you who have joined us today for the culmination ceremony of project Conversations on Touch, Caring and Protecting Tender Hearts. Today, we are extremely obliged and greatly honored to have amidst us Honorable Mr. Justice Satish Chand Sharma, who in his short term till now as Chief Justice, High Court of Delhi, and as our Patron-in-Chief, has extended unconditional support to all our initiatives and encouraged us to strive harder to reach out to the masses. I must mention here that Sir immediately agreed to come for this program when we apprised him about this special project to teach children about good touch and bad touch and their bodily safety. The promptitude with which Sir agreed to come for this event is a testimony of his commitment and concern for child safety issues. मान्यवर, मैं सभागार में उपस्थित सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। I also take this opportunity to extend my heartfelt gratitude and sincere felicitations to Honorable Mr. Justice Siddharth Mirdul for extending support and appreciation to DSLSA, where deserved, while at the same time giving positive suggestions to ramp up the scale and magnitude of our work so that the dream of access to justice for all becomes a living reality. Honorable Mr. Justice Mirdul has, since the very inception of this project, extended great support and encouragement to ensure that this program is a resounding success. We heartily welcome you here, sir. I also extend a special welcome to other honorable judges of High Court of Delhi who have graced today's function by taking time out of their busy schedule to attend this event. Your presence enthuses us and encourages us to continue our work with greater zeal and enthusiasm. I also welcome Shri Ashwani Kumar, Special Officer MCD, Shri Gyanesh Bharti, Commissioner MCD, and Shri Himanshu Gupta, Director, Department of Education, Government of NCT of Delhi, without whose active support and cooperation, this project could not have been successfully completed. I take this opportunity to express my abiding sense of gratitude and appreciation to them. I also extend a warm welcome to learned principal, district, and session judges of various districts across Delhi who also officiate as chairpersons of their respective district legal services committees and who have been steering the work of legal aid and awareness in their respective districts with missionary zeal and fervor. I also extend a warm welcome to Learned Registrar General and Learned Registrar Vigilance, High Court of Delhi, and Director Administration, and other officers of Delhi Judicial Academy, who have taken time out of their busy schedule to be here with us this morning. I also cordially welcome the other attendees, especially the LSEs, who volunteered to take sessions in schools, and the students who participated so enthusiastically in the sessions. मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको प्रेरित करती है और हमारे संकल्प को और भी दृढ़ करती है। Sir, DSLSA started this project on 23rd July this year as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav to showcase our commitment to spread awareness about a topic of seminal importance in the contemporary times, that is, the issue of child sexual abuse by teaching children about good touch and bad touch.
The importance of having such sessions can be gauged from a few lines written by a child sexual abuse survivor. It goes like, इसी बचपन की आज़ादी को हम इन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं। बेफिक्र बचपन जब खौफ ज़दा हो जाए, बेफिक्र बचपन जब खौफ ज़दा हो जाए, उम्र नहीं वो कि खुद भी समझ पाए। हर छुअन को अनदेखा करना, बिना जाने ही यूं पल पल का मरना। ना भाता था मुझको उसका कमरे में आना, ना भाता था मुझको उसका कमरे में आना, या फिर उसका प्यार से मुझे हाथ लगाना। भोली थी मैं, गुड बैड टच कहाँ था पता, यकीन मानो पर ना थी उसमें मेरी कोई खता। काश कि कोई मुझे भी समझाता, बचपन मेरा बच जाता। Realizing that child sexual abuse can leave deep emotional and psychological wounds on the sexually abused children, thereby permanently scarring their lives, and recognizing the need to start a hitherto unconventional yet important conversation about safe touch and unsafe touch, DSLSA spearheaded this awareness campaign in different schools across Delhi. In the last 2 weeks, officers of this authority and also the empaneled legal aid councils of DSLSA have taken sessions on good touch and bad touch in schools across Delhi. During these sessions, they have used the safe touch versus unsafe touch paradigm to educate children to help them protect themselves from sexual abuse and exploitation. Hopefully, these sessions would enable and empower the tender hearts to resist and thwart any attempt of sexual abuse by recognizing the same at the very outset. I must also mention here that while taking these sessions in schools, our resource persons not only interacted with the students, but also had interaction with the teachers and other staff members of the school. The resource persons apprised the teachers and other personnel about the duty to compulsorily report incidents of child sexual abuse, as is the mandate under POCSO Act. I am sure these meaningful interactions that the resource persons had with the teachers and staff would make the schools the secure haven as is desired. During the course of the project, Team DSLSA has covered around 150 schools of MCD and that of Department of Education, Government of NCT of Delhi. In all, we have reached out to around 23,492 students and their teachers and other staff members across Delhi. As a part of this project, we have also installed information boards in different schools, like the one Honorable Sir inaugurated today only, regarding the beneficiaries entitled to legal aid and where they can reach out to us. These information boards are not just meant for the current lot of students studying in the schools, but will also be useful to the students who enroll in these schools later. It is sincerely hoped that in the times to come, more people will be able to reach out to us, thereby bringing justice closer to them. Also, showing our commitment to do away with single-use plastic and with a view to publicize our work, we shall also be distributing school bags and jute bags containing information about DSLSA and DLSAs working in Delhi to children and other attendees today. The school bags have been provided by BACS from out of its funds earmarked for CSR activities. With this, I once again welcome you all aboard this socially oriented project launched by DSLSA. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your address. Proceeding further, we'll now play a short video clip showing the highlights of the project Conversations on Touch, Caring and Protecting Tender Hearts.
Hope you enjoyed seeing the vignettes of this program spread across different schools of Delhi. With this, I pass on the baton to my colleague, Ms. Suprati Chawla, who will be doing the comparing now. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत खूबसूरती से 23,000 से ज़्यादा बच्चों को एक नया संदेश आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में दिया गया और मुझे लगता है जिस डिपार्टमेंट ने इसे किया उसके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए. खूबसूरत कल्चरल आइटम्स, बच्चों ने जो सीखा और बच्चे जो इस राष्ट्र के लिए करने जा रहे हैं उसका एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन अब हम इस श्रृंखला में देखेंगे. सबसे पहले दिल्ली नगर निगम के छात्र छात्राओं की जो रोहिणी क्षेत्र से आए हैं एक सुंदर प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत होगी. स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम. पर हर प्रस्तुति से पहले एक चीज़ सीखते हुए चलेंगे और इस समय हम सीखेंगे ताली बजाने से पहले और उनको आमंत्रित करने से पहले एक नंबर 1098 1098. एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं रोहिणी क्षेत्र के इन बच्चों का जो आपके लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत कार्यक्रम. भले होली दिवाली ईद की खुशियां मनाएं हम, भले ही कामयाबी के कितने जश्न मनाएं हम, अगर हम चाहते हैं गुलामी स्वर्ग से सुंदर देश हमारा
तालियों की गड़गड़ाहट दिखाती है कि 4 से 10 साल के इन बच्चों ने किस तरह आपका मन मोह लिया। धरती, अंबर, पर्वत, नदियाँ हैं ये इसकी जान, पर सबसे ज़रूरी वो इंसान, वो बच्चा जिसके बिना ये देश अधूरा है। और जिस ट्रेनिंग को यहाँ पर दिया गया 150 DOE और MCD के स्कूल्स में दिया गया, दैट इज़ जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो हम आप सबको यहाँ पर इस मंच से बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए अब आनंद लेते हैं अगली प्रस्तुति का, जिसे लेकर आए हैं सेंट्रल जोन से छात्र एवं छात्राएं। रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। एक बार जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए इन बच्चों का। छोटी छोटी कड़ियाँ लेकिन आपसे जुड़ती हुई। और हम अक्सर कहते हैं कि आँखों में पानी, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आइए आनंद लेते हैं। यहाँ हर कदम
खूबसूरत प्रस्तुति और सेंट्रल जोन के छोटे बच्चे, निगम विद्यालयों से आए हुए बच्चे, पर इनके चेहरे पे मुस्कुराहट तब लगेगी और तब तक रहेगी जब इस अवेयरनेस कैंपेन को हम ऐसे ही चलाते हुए चलेंगे और बच्चों तक हम हर शिक्षा को पहुंचाते हुए चलेंगे। आइए अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं SKV दरियागंज से आई हुई 15 छात्राओं के एक समूह से, जो लेकर आई हैं आपके सामने एक एकता गीत। एकता, स्वतंत्रता, समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, यानी कैरेक्टर कम्स फर्स्ट। अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए और जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए SKV दरियागंज की इन छात्राओं का। हम अगर समझें तो कहती है कलाई की घड़ी, साथ देना है सभी को वक्त की रफ्तार का। आइए साथ दें। महानता रहे। रे रे सा नी सा नी नी पा म पा, रे रे सा नी सा रे रे सा म म रे पा पा म नी नी पा नी नी पा नी नी सा जा, जाती है अनेक रक्त एक राष्ट्र का, एक राष्ट्र का गाँव है अनेक स्वप्न एक राष्ट्र का, एक राष्ट्र का रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, एक राष्ट्र का चेतना समग्रता समानता रहे, चेतना समग्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता
बहुत खूबसूरत प्रस्तुति एसकेवी दरियागंज की इन छात्राओं से। देश में चरित्र की महानता रहे और शायद पॉक्सो एक्ट सिखाने का मकसद भी ये रहा। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन सिखाने का नंबर भी यही बताते हुए बनाया गया और बच्चे याद रखेंगे 1098। 1098 आप भूल जाएंगे, 1098 हर बच्चे के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। इस सारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना ही कि हम कुछ नया सीखें और आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक नया रूप दें। आइए अंतिम प्रस्तुति की तरफ बढ़ते हैं, जिसे लेकर आए हैं करोल बाग क्षेत्र से छात्राएं। देखो देखो आकाश पर आज छा गया तिरंगा, ये जागा हिंदुस्तान। पर जागेगा तब जब आप जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करेंगे और बहुत खूबसूरती के साथ इन बच्चों के इस मन के भावों को पढ़ेंगे। आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत प्रस्तुति का। अपनी कश्ती को किनारे से बजाना सीखिए और खूबसूरत कश्तियों को किनारे से बजाने के लिए हमारे मध्य करोल बाग क्षेत्र की ये छात्राएं। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, ऐ वतन वतन ऐ माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तान है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तान है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो। नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी। गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।
आजा आजा जिंदे शामी गाने के तले आजा हरी हरी नीले आसमां के तले जय हो शपथ जय हो गमे दे जय हो हमें दे जय हो मैं तो भी जय हो खिले हुए चेहरों की मुस्कान बताती है कि वातावरण सचमुच में आनंदमय हो गया है और सबको अपने बचपन की तरफ कहीं ना कहीं खींच कर ले गया है। हमने 1098 एक हेल्पलाइन नंबर सीखा, पर उसके साथ साथ बच्चे और यहाँ बैठे हुए सभी को सूचित करना चाहेंगे कि जो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है 24/7 उनका भी एक हेल्पलाइन नंबर चलता है और वो भी बहुत आसान है 1516 इसको भी याद रखें। और जब भी आपको कोई ऐसी ज़रूरत हो तो कृपया उन्हें ज़रूर कॉल करें और संपर्क करें। अब मंच पर पुनः आमंत्रित करूंगी हर्षिता मिश्रा जी को कि आएँ और आगे के कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाएं। हर्षिता मिश्रा जी। फेलो मेट्स हमेशा हमारे लिए 1 और 1 11 बनाने का काम करते हैं। वेलकम हर्षिता। थैंक यू सो मच सुप्रीति मैम। इन परफॉर्मेंसेस को देख के मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं। कमज़ोर ना समझो उन्हें जो आवाज़ें खामोश रहती हैं, चुपचाप सी हवाएं भी एक तूफ़ान लिए रहती हैं। These lines are a befitting tribute to these dynamic youngsters who gave such a powerful performance. They deserve a big round of applause for these beautiful performances. I'm sure these performances will remain etched in our collective memories for a very long time to come. We'll now proceed further with the program in a short while. मुझे लगता है ये समय जो 2 या 1 मिनट मिलता है ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होता है। यकीनन सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है। हम और आप आपस में बातें करने लगे थे। बातें इसलिए कर रहे थे कि जिन 23,000 बच्चों ने सीखा, क्या उन्होंने सचमुच में सीखा? तो बच्चे एक बार हाथ उठाकर ज़ोरदार तालियों की आवाज़ के साथ बताएंगे कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मैं अक्सर मंच से कहती हूँ कि सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे, और बार बार कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदल लो, किनारे बदल जाएंगे। लेट्स चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज चिल्ड्रन, टुवर्ड्स आवर प्रोफेशन। आप ताली बजा सकते हैं, आपके हाथ क्यों रुक जाते हैं? यस, अपने लिए ताली बजाइए। ये पूरी लीगल विंग अपने लिए बजाए, बच्चे अपने लिए बजाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने लिए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली अपने लिए बजाए।
इसलिए बजाय कि कम से कम कोई तो आगे बढ़ा, किसी ने तो हिम्मत की, किसी ने तो लोगों का एटीट्यूड बदलने की कोशिश की। और सच में चरित्र नहीं जब शेष रहा तो देश कहाँ जाएगा। हमें सबसे पहले कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देनी है। और खुलता हुआ पर्दा बता रहा है कि अब कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाना है। हर्षिता मिश्रा जी। I would now request the honorable dignitaries to come to the dais. I request the learned member secretary, sir, to accompany the guests to the dais. A big round of applause for our dignitaries again. With this, we proceed further. I would now like to call upon Shri Ashwini Kumar, Special Officer MCD, to hand over a potted plant to Shri Satish Chandra Sharma, Honorable Chief Justice, High Court of Delhi, and Patron-in-Chief of Delhi State Legal Services Authority. I would now like to call upon Shri Bharat Parashar, Learned Member Secretary, Delhi State Legal Services Authority, to present a small token of gratitude to Honorable Chief Justice. I now call upon Shri Gyanesh Bharti, Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, to hand over a potted plant to Honorable Mr. Justice Siddharth Mridul. अब मैं श्रीमती अनुराधा शुक्ला भारद्वाज, सेक्रेटरी दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी से निवेदन करती हूं कि वो हमारे सम्मानित अतिथि माननीय श्री सिद्धार्थ मृदुल जी को के स्वागत हेतु उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। I would now like to call upon Shri Brijesh Singh, Additional Commissioner, MCD, Law, to hand over a potted plant to Shri Ashwini Kumar, Special Officer, MCD. Shri Brijesh Singh ji. अब मैं श्री सुशांत चंगोत्रा, स्पेशल सेक्रेटरी, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से सविनय आग्रह करती हूँ कि वो हमारे सम्मानित अतिथि माननीय श्री अश्विनी कुमार जी को के स्वागत हेतु एक स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें। I would now like to call upon Shri Anil Kumar Sharma, Chief Law Officer, MCD, to hand over a potted plant to Shri Gyanesh Bharti, Commissioner, MCD. अब मैं श्री सुमीत आनंद, एडिशनल सेक्रेटरी, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वो हमारे सम्मानित अतिथि माननीय श्री ज्ञानेश भारती जी को सम्मानपूर्वक एक स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें।
I would now like to call upon Shri Vikas Tripathi, Director Education MCD, to hand over a spotted plant to Shri Himanshu Gupta, Director Education Department, Govt of NCT of Delhi. अब मैं मिस साइमा जैन, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे सम्मानित अतिथि माननीय श्री हिमांशु गुप्ता जी को सम्मानपूर्वक एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। थैंक यू। हम दक्ष हैं लक्ष्य को पाने में, हम सक्षम हैं आगे जाने में। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं मंचासीन विभूतियों से आग्रह करूंगी कि वो हमारे बीच उपस्थित स्कूलों के इन प्रतिभाशाली बच्चों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने हेतु कुछ स्कूल बैग्स और जूट बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करें। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करती हूँ कृतिका, डॉटर ऑफ दिनेश कुमार को, कि वो आकर अपना बैग लें। कृतिका, हमारे बीच आज की स्टार कृतिका मौजूद है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि वो उसे एक बैग भेंट करें। A big round of applause for this little champion. I now call upon Ona Khan, daughter of Muhammad Amir ji, to come to the stage. I would now request Honorable Mr. Justice Siddharth Mridul to present a bag to this little talent. I now call upon Miss Jeeva, daughter of Vijay Kumar, to come onto the stage. I request Honorable Bharat Parashar sir, Learned Member Secretary, to hand over a bag to the little talent. I now call upon Hani, daughter of Paras Harijan, to come onto the stage. I request Ashwini Kumarji to hand over a bag to her. I now request Afia, daughter of Salim, to come onto the stage. I request Ashwini Kumarji to hand over a bag to her. I now call upon Uzma, daughter of Muhammad Shakil, to come to the dais. I request our guest, Himanshu Gupta ji, to hand over a bag to her. I now call Nazma, daughter of Muhammad Umair, to the stage. I request the Honorable Chief Justice to present a bag to her. A big round of applause for Nazma. I now call upon Aditi, daughter of Sri Suresh Kumar, to come to the dais. I request Honorable Mr. Justice Siddharth Mridul to present a bag to her. I now call upon Ranjita, son of Sri Jitu, to come to the dais. I request Bharat Parashar sir to hand over a bag to this little talent. Ranjita. A big round of applause for Ranjita. I now call Vanshika, daughter of Sri Pradeep Kumar, to come to the dais and take a bag and ask our honorable guest, Sri Gyanesh Bharti ji, to give a bag to her.
Thank you so much. With this, we proceed further with the program, and I now call upon Shri Himanshu Gupta, Director, Education Department, Govt of NCT of Delhi, to kindly address this August gathering. Over to you, sir. Honorable Mr. Justice Shri Satish Chandra Sharma Sir, Chief Justice Delhi High Court and Patron-in-Chief of Delhi State Legal Service Authority, Honorable Mr. Justice Siddharth Mridulji, Executive Chairperson of DSLSA, Honorable Judges of Delhi High Court who are present today and other courts of law, Honorable Special Officer Shri Ashwini Kumar Sir, Honorable Shri Gyanesh Bharti ji, Commissioner MCD, Honorable Member Secretary DSLSA Shri Bharat Parashar ji, and all the other officials present today, and my dear students and all the teachers also present today. सर, आज ये एक बहुत ही खुशी का मौका है और एक बहुत ही एक बढ़िया सर शुरुआत हुई है कि हमारे स्कूलों के अंदर DSLSA ने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के 75 स्कूल लिए गए और उसके अंदर बच्चों को गुड टच, बैड टच, पॉक्सो के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने खुद जजेस और लॉयर्स ने आके सेशंस लिए, लेक्चर्स लिए, हमने सर उसके बाद बच्चों से और टीचर से उसका फीडबैक लिया और उसके अंदर पाया गया कि बच्चों ने जिस तरीके से इन प्रोग्राम्स के अंदर इंटरेस्ट दिखाया और जिस तरीके से सवाल पूछे, उससे पता चलता है कि ये प्रोग्राम कितना ज़रूरी है। पिछले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब नालसा का प्रोग्राम अटेंड किया था तो उसके अंदर एक चीज़ बोली थी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग के साथ ईज़ ऑफ जस्टिस कितना ज़रूरी है। और ईज़ ऑफ जस्टिस के अंदर ईज़ ऑफ रिसीविंग जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे या हमारे जो भी गरीब तबके से भी लोग आते हैं उन सब को लॉ की लीगल अवेयरनेस हो, और उसके अंदर DSLSA बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मैं अपने कुछ टीचर से और प्रिंसिपल से फीडबैक ले रहा था कि ये प्रोग्राम कैसा रहा, तो बहुत अच्छे से मेरे एक प्रिंसिपल ने अभी यहाँ बैठे भी हैं, उन्होंने बताया कि सर बच्चे जब ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे तो बहुत अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहे थे, सिर्फ लॉ, पॉक्सो और गुड टच, बैड टच के बारे नहीं, वो वैसे भी पूछ रहे थे कि हमारे परिवार के अंदर अगर मामा जी और चाचा जी में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है या बहुत ज़्यादा लीगल डिस्प्यूट रहते हैं तो हम किस तरीके से उसके लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं हमें बताया जाए। सिमिलरली हमें प्रिंसिपल मैडम SKV मैगज़ीन रोड से बता रही थी कि एक बच्ची ने जब ये प्रोग्राम हुआ तो आके बताया कि मेरे घर में एक ऐसी घटना हुई थी और जब मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन फिर भी बच्ची को जब ये प्रोग्राम हुआ तब उसे एहसास हुआ नहीं, वो चीज़ जो थी वो गलत थी। इसके अलावा बच्चों को नंबर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, हेल्पलाइन के नंबर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, और सर हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि जो लेक्चर्स हुए हैं हमारे टीचर्स ने भी अटेंड करे हैं और हमारे टीचर्स फर्दर उन सेशंस को बाकी क्लासेस के अंदर भी लेकर जाएंगे ताकि ये पहल जो अभी हुई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो हमारे 75 स्कूल लिए गए हैं, ये दिल्ली के सभी स्कूलों के अंदर हमारे जो 16 लाख डायरेक्टरेट एजुकेशन के बच्चे हैं और MCD के 8 लाख बच्चे हैं, सब तक ये मैसेज पहुँचे, सो दैट ईज़ ऑफ रिसीविंग जस्टिस के लिए जो एक लीगल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है वो हमारे एक एक बच्चे तक पहुँचे। तो मैं दिल से, हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ चीफ जस्टिस सर का, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल सर का, मेंबर सेक्रेटरी भरत पराशर सर का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंसीव किया और लॉन्च किया। और सर हम पूरा आपको आश्वासन दिलाते हैं कि इसको दिल्ली के हर एक स्कूल के अंदर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your valuable perspectives with us. With this, I now call upon Shri Gyanesh Bharti, Commissioner MCD, to address this August gathering. Honorable Mr. Justice Satish Chandra Sharma ji, Chief Justice, High Court of Delhi and Patron-in-Chief Dalsa. Honorable Mr. Justice Sri Siddharth Mridulji ji, Judge, High Court of Delhi and Executive Chairperson Dalsa. Honorable Companion Judges of High Court of Delhi, Special Officer MCD,
Member Secretary Dalsa, officers of Higher Delhi Judicial Service, Director Education, Government of NCT of Delhi, learned counsel and advocates, teachers and students, we welcome you all. It is really a privilege for me to be in this culmination ceremony of Conversation on Touch by the Dalsa for spreading awareness about the provision of POCSO Act 2012. In today's challenging environment, our society is moving forward with the strength of technological support and research. In the perspective of technical, economical, and social aspects, we are moving towards a cosmopolitan society. But on the other hand, practically there are many sensitive subjects in the society on which it is necessary to take cognizance. Child abuse is one of them. Children are the future of our society and prospective citizens of the country. Their all-round development is necessary for a good future. But problem of child abuse acts like slow poison in the life of the child, which shatters his or her confidence. Therefore, it is very necessary that all stakeholders of the society must tackle these evils through inclusive and integrated efforts. Dalsa has organized these workshops for our students in 75 MCD schools and about 75 schools of the Directorate of Education, Government of Delhi, in which children were made aware about the POCSO provisions of POCSO Act, child rights, good touch, bad touch. It is a matter of great happiness that our children got information from the jurists, judges, and learned counsels. Getting information, getting knowledge as a subject is one thing, but if the same knowledge is imparted and received through the learned people, then it is definitely more effective. Children have also received leaflets, information booklets in the workshop so that this information will stay safe with them for a long period. I would like to share that about more than 8.5 lakh students are getting education in MCD schools, and we are having about 1530 MCD primary schools. In our schools, activities are taken to create these kind of awareness from time to time. This is really a very good endeavor from the Dalsa side, and all kind of lectures like drug abuse, sexual offenses, POCSO provisions have been carried out from time to time. We have counselors also who impart this kind of counseling to our students. And we have 12 zones workshop among teachers are being organized from time to time. And certainly the kind of awareness which has been continued in the last couple of days by Dalsa is going to be a catalyst in coming days. Another important thing which I feel about the workshop, apart from awareness, is that meeting jurists and the learned judges during the course of interaction with children and teachers. It is certainly going to instill a different kind of confidence amongst them. The way honorable judges have given their valuable time to this campaign from their busy schedule, it is really exemplary. On behalf of my education department colleague, I assure all the guests that we'll take this awareness program to each and every school in the corporation. In future also, if Dalsa organizes such or any type of such workshop, we really welcome those. I sincerely hope that the children of the corporation and other schools of Government of Delhi have been immensely benefited with the awareness program, and I sincerely extend my gratitude to the Honorable Chief Justice and companion judges of High Court of Delhi, judicial officer, advocate, teachers, students, and all participants. I also convey my best wishes to everyone for Azadi Ka Amrit Mahotsav. Thank you. Dhanyavad. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपके शब्दों को सुनने के बाद मैं डालसा की ओर से कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी। जिसे ध्यान हो अपने ध्येय का, वही जागेगा, वही जीतेगा। हर व्यक्ति को न्याय मिले, इसको अपना ध्येय बनाकर हम आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। विद दिस I would now like to call upon Shri Ashwini Kumar, Special Officer MCD, to address this August gathering. माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी, न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, दूसरे जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, other judicial officers, my colleagues in MCD, teachers, प्यारे बच्चों, आज का दिन it is a blessed day. We are celebrating 75th anniversary of our Independence Day, and at that occasion, ये जो ज्वलंत समस्या है समाज में, a very burning issue that we have tried to incorporate. I profusely thank our Chief Justice to have spared time and made it a point to attend, enthused all of us. In fact, this awareness is very, very important. DALSA has been doing a very good job on this topic. When we are talking about child abuse, the schools are very, very important place where such programs are required to be held. And these programs have been held with a lot of success. समाज वही अच्छा है जो अपने वनरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखे, नहीं तो कोई समाज का मतलब नहीं है। सभ्य समाज का मतलब यही है। और इसमें जब हम बात करते हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे सोशली डिस्क्रिमिनेटेड हों, चाहे जेंडर पे फीमेल की बात करें, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको कोशिश करना कि वो एम्पावर्ड हों, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी श्रृंखला में हम देखते हैं तो पाते हैं कि बच्चे सबसे वनरेबल हैं। उनके पास न तो एक शारीरिक शक्ति है, न उतना मेंटल स्टेमिना है, वो दुनिया को भी समझ ही रहे हैं। और ऐसे मौके में कोई घटना उनके साथ यदि हो जाती है तो जैसे हमारे साथी भरत पारासर कह रहे थे, उनके लिए जीवन पर्यंत एक साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि कानून तो बन गया और कानून बहुत अच्छा है, इसमें कई अच्छी चीज़ें की गई हैं कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से हो, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल जल्दी हो, चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल हो। लेकिन हम इस भावना को किस हद तक समाज में पहुंचाने में काबिल रहे हैं, ये एक विषय है। और इसमें जितना ही हम बच्चों के पास स्कूलों में जा करके बार बार उनके साथ जब तक संपर्क स्थापित नहीं करेंगे, तब तक शायद वो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और जब बच्चों के साथ संपर्क करेंगे तो बड़ी सीधी सी बात है कि अब ये बात उनके घरों तक पहुंचेगी, बच्चे अपने घरों में बताएंगे। और सबसे मेरे हिसाब से यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, एक सीधा मूल मंत्र में जो कहूँगा वो ये है कि जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती है उसको कहिए, स्पीक आउट। और एक यदि इस प्रिंसिपल को यदि हम अडॉप्ट करें अपने घरों में, अपने स्कूलों में, कभी कभी ऐसी घटनाएं स्कूलों में भी होती हैं, बड़ा दुख होता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है, बहुत दुख होता है। लगता है कि हम कैसे माने वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जिसको हमें करना चाहिए। अवेयरनेस इज़ द की। हमारे देश में करीब मैं पढ़ रहा था 470 मिलियन चिल्ड्रन हैं बिलो 18 ईयर्स, लगभग 1/3 पॉपुलेशन। और ये शायद इस तरीके का पॉपुलेशन का प्रोफाइल अभी कुछ समय और रहेगा। और यही हमारे देश की धरोहर हैं, यही हमारे देश के भविष्य हैं। यदि हमें इनको मेंटली स्ट्रांग रखना है, इनको क्रिएटिव रखना है, इनको पावर्ड रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी फीमेल चाइल्ड को आगे बढ़ चढ़ के हमें उनके राइट्स को, उनको बिल्कुल, उनके हौसले को बिल्कुल बुलंद करना है। और ये यदि किया जा सकता है तो उनके घरों में उनके माँ बाप, उनके भाई बहन सब मिल कर के करें। और हमारे टीचर्स जो कि एक और गार्जियन का रोल अदा करते हैं हर स्कूल में, उनकी बहुत बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी है। और यदि अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। MCD के प्राइमरी स्कूल, जैसा कि हमारे कमिश्नर साहब बता रहे थे, करीब 8.5 लाख बच्चे हैं। करीब मैं हिमांशु जी बता रहे थे, डायरेक्टर एजुकेशन, करीब 16 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं। और ये जो वनरेबल ग्रुप है, वी हैव टू रीच आउट टू देम। और हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके
इस काम में अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एक ऐसी चीज़ है जो बियॉन्ड चाइल्ड एब्यूज़ जाता है। बच्चे को लगे कि वो स्कूल में ही इज़ वेलकम, ही इज़ रेस्पेक्टेड, हिज डिग्निटी इज़ रेस्पेक्टेड। जब उसके मन में ये हो जाएगा तो अपने आप ही सब चीज़ें दे विल फॉल इन लाइन। और जो लोग ऐसे इस तरीके से जिनकी प्रवृत्ति है वो डरेंगे। और स्पीकिंग आउट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। और एक और चीज़ जिसको मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, बड़ी छोटी सी बात है, वो ये है कि हम अपने घरों में जो मेल चाइल्ड है, कभी कभी हम बहुत फॉरगिविंग होते हैं, अरे क्या वो तो बच्चे ही तो है, ये नहीं चलेगा। अपने बच्चों को छोटी उम्र से मेल चिल्ड्रन को बताएं कि कंडक्ट क्या होता है, और यदि हम सब उनको समझाएं सिखाएं छोटे पर से, तब वो आगे चल के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। वो अपनी भी कद्र करेंगे, अपनी भी डिग्निटी का ख्याल रखेंगे, और उनके साथ में जो दूसरे बच्चे हैं चाहे बच्चियां हैं उनका भी ख्याल रखेंगे। हमें एक दूसरे सबका ख्याल रखना है। मैं अंत में पुनः अपने मुख्य न्यायाधीश का अभिवादन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अश्विनी सर। अब मैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी से सविनय निवेदन करूंगी कि वो मंचासीन विभूतियों एवं सभागार में एकत्रित श्रोतागण को संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। Good morning. I will reverse the protocol. First of all, I would like to welcome all these beautiful children who are present in large numbers with us today. Unfortunately, I remember when I was a young boy, my father would fawn on young girls and he would tell me कि मुझे बच्चों से बेहद प्यार है। आज इस देश में और इस शहर में ये हालत हो गई है कि अगर आप ये बात कहें, you will be viewed with suspicion। और ये दोष हमारे बच्चों का नहीं है, ये दोष हमारा है। हम अपनी सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाने में पूरी तरह से कार्यरत नहीं हुए हैं। कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी जो अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर सकती, उसे सिविलाइज्ड नहीं कहा जा सकता। और हमारा परम धर्म है कि हमारी बच्चियां जो हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जो जिंदगी भर दुखदाई हो उनके लिए। सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस महोदय जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का आभार प्रकट करूंगा कि वो उन्होंने हमारी गुजारिश पर पिछले हफ्ते इस हफ्ते के लिए हमें सहमति दे दी कि वो उपस्थित रहेंगे, और उनकी सहमति बहुत आवश्यक थी बिकॉज ही इज़ नॉट ओनली अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग बट ही इज़ ऑल्सो द पेट्रन इन चीफ ऑफ द दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। थैंक यू सो मच चीफ। I would like to welcome and thank all my sister and brother judges, Justice Anu Malhotra ji, Justice Asha Menon ji, Justice Purushendra Gaurav, I think he had to leave, Justice G. Tushar Rao and Justice Gaurang Kant for being here on a Saturday morning to encourage us
and to show how seriously we take the protection of children, and particularly the girl child. I would also like to thank all my siblings who are in the audience, all the district judges who are here, and other judicial officers for being here on a Saturday, and for all the effort that they've put into this program, into this project. I am grateful to Ashwini Kumar ji for his words and for being present here today. ज्ञानेश भारती जी जो कमिश्नर हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, पर वो परिचय इमारतों के संबंध में था। ये परिचय जो है ये ज्ञान के संबंध में है। हिमांशु गुप्ता जी, जिनसे आज पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़े संक्षेप में ये बताया कि दिल्ली में कितने स्कूल हैं एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट के, और वहाँ पर 24 लाख छात्र पढ़ते हैं। ये सुन के माय हार्ट swells with pride. Thank you so much. मैं हमेशा एक रिटन स्पीच लाता हूँ, but it's very rare that I stay on it. Therefore, I'd like to begin with something that is for all of us adults, and not just the ones gathered here. And it reminds me of this Urdu couplet by none other than Ahmad Faraz. And he said, शिकवाए जुल्मत शब से तो बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। This is not the culmination of anything, but the first phase of a long battle to ensure that no child is ever visited by predators, and that there is no occasion for us to counsel them on what a good touch or a bad touch is. And that is our ultimate goal. And in the last 1 year, under the able stewardship of Justice U.U. Lalit, the Chief Justice of India designate, who has gone into overdrive when it comes to justice, access to justice for all, we have launched a large number of campaigns, not just to bring justice to the doorstep of every citizen of this country, but we've also taken up issues which relate to social reformation. And this is one of those endeavors. और जब भरत पराशर जी पहली बार मेरे पास आए and said that we would like to initiate this project along with the Directorate of Education and the Municipal Corporation on conversations on touch, caring and protecting tender hearts, I was delighted, to say the least, because this is something which is very close to my heart. POCSO has been enacted to deal with an environment where children are being abused, violated, assaulted with impunity by predators who do not accost them outside of their homes, but more often than not within the confines of their own homes. And therefore, it's with the utmost seriousness that I say that not only do we need to apprise the children of what is a good touch or a bad touch, we need to reach out to their parents, their tutors, their family members about what is a good touch and what is a bad touch, and how you must treat every girl child in particular with the dignity that they deserve
a dignity which is inherent in their very birth, in their very existence. Of course, I will congratulate all of you for having reached out to over 23,000 students. But 23,000 students is just the tip of the iceberg. We need to reach out to 24 lakh students. We need to put this issue on the agenda in a manner that it acts as a deterrent to every predator in the city. And we will not rest till we accomplish that. Everybody before me, all the speakers before me, have spoken about how these unsavory incidents scar the psychological well-being of children and blight their futures. And I will not focus attention on that on this occasion with children present. But I must tell you the program, the cultural program that was organized, and the children who participated in those cultural events, and their joy of living and their enthusiasm gladdened my heart. कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन. But the fact is, I have something to share with the children as well. When we were younger and our convictions were stronger and we had the courage of our convictions, what every parent said to their children was, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के. The reason I have said this is कि मेरी हर बच्चे से जो यहाँ मौजूद है, मेरी ये उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जितने भी अपने दोस्त हैं, घर परिवार वाले हैं, जो भी घर पे आते हैं, आप सबको जो आपने सीखा है वो सब शेयर करिए उनके साथ, ताकि इस शहर से बच्चों के खिलाफ जो होता है वो दोबारा कभी ना हो. और ये यू टेक अ प्रॉमिस, यू टेक अ वाव टुडे कि आप सबके साथ शेयर करेंगे ये जो आपने सीखा है. Last but not the least, I am grateful to all the teachers of all these schools who are carrying this important message to all the children, and also the judges, the lawyers, and the entire legal services and legal aid community for all their efforts. And we propose to make sure that more judges, more lawyers, and more paralegal volunteers, along with school teachers, are integrated into this program, which we will continue. And therefore, this culmination is in fact just the culmination of the first phase of this project to securing the welfare and well-being of our children. And I promise that we will not rest till we've carried this message that the children of this country come first to each and every household and every citizen of this beautiful city. Thank you and Jai Hind. थैंक यू सो मच लॉर्डशिप. आपका बहुत बहुत आभार. आपके द्वारा दी गई प्रेरणा निश्चित रूप से ही हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी. आपके प्रेरक शब्दों को सुनकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं. हौसले हमारे कितने विश्रब्ध हैं, एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ तय है. With this,
I now request the Honorable Chief Justice to come and address the august gathering. A very good morning to all of you. My esteemed colleague, Justice Siddharth Nadulji, my other sister and brother judges from High Court of Delhi, learned principal district and sessions judges and chairpersons of various district legal service authorities, Shri Ashwini Kumar, Special Officer MCD, Shri Gyanesh Bharati, Commissioner MCD, Shri Himanshu Gupta, Director, Directorate of Education, Government of NCT Delhi, Learned Registrar General and Registrar Vigilance, High Court of Delhi, Learned Director Administration, Delhi Judicial Academy, Secretaries of various district legal services authorities, Director Department of Education MCD, Legal Aid Councils, PLVs, empaneled and enrolled with Delhi State Legal Services Authorities, officers of MCD and Directorate of Education, dear students, teachers, and principals of different schools of Delhi, esteemed persons from print and broadcast media, ladies and gentlemen, I consider it a great privilege to be here today to address an audience as diverse and as socially sensitized by you. At the outset, I would like to congratulate Team DALSA for starting this project, Conversations on Touch, Caring and Protecting Tender Hearts, under the able, enthusiastic guidance of my brother, Justice Siddharth Nadulji. In fact, all these drives and initiatives have been started under the guidance of Honorable Justice U.U. Lalit. I still remember when I was in Hyderabad, there's a remote place called Samshabad. Justice Lalit came all the way from Delhi to attend a program which was organized by children, and a request was made to him that the children wants to meet him and he was getting late for the flight. He told the organizers that I'll first meet the children and then I'll go for the airport. So we are working under a person like Justice U. Lalit, who is a great caring person and who has taken special interest in such matters. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली के 150 स्कूलों में न सिर्फ इस अति आवश्यक विषय पर चर्चा कर हमारे बच्चों को जागरूक बनाने का प्रयास किया है, पर उनके साथ ही उन सब स्कूलों में विधिक सहायता से संबंधित 150 इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगाए हैं, ताकि बच्चों को शुरुआत से ही फ्री कानूनी सहायता के बारे में जानकारी मिल सके और वह अपने अधिकारों के बारे में जागरूक भी बने। वह अपने परिवार के सदस्यों को भी इस बारे में जानकारी दें। मैं यहाँ उपस्थित सब लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि अगर बच्चे हमारे आंगन के फूल हैं तो हम सब इनके माली हैं। इन्हें अच्छा और स्वस्थ बचपन मिल सके, यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। This culmination ceremony of the project should not be seen as an end of the project. It should be seen as a new beginning of the crusade against child sexual abuse. It should be seen as an event to honor the efforts of DALSA and its frontline workers, that is, legal aid councils empaneled with it, who have strived long and toiled hard to spread awareness about safe touch and unsafe touch and important child rights amongst the school-going children. This event should not be seen as recognized of sensitivity shown by DALSA in addressing a major root cause of child abuse, that is lack of awareness among children about good touch and bad touch and how to differentiate between two. Today's ceremony is also a celebration of active collaboration between different state actors such as DALSA, MCD, and Directorate of Education, Government of Delhi, to counter the menace of child abuse by educating and empowering the tiny tots and adolescents.
as child spend a significant part of their childhood and formative years in schools, it is imperative that they are imparted education on good touch and bad touch in schools itself. Since in most of homes, nobody is talking about the same, it is very crucial to initiate these conversations in school. The need of imparting this kind of education becomes very necessary by catching these young children and teaching them to differentiate between safe and unsafe touch and teaching them about appropriate touching behavior. Though DALSA has set the ball rolling for these conversations, the school should consciously and concretely take the conversation forward and make it part of their curriculum and constantly keep reminding children what is a safe touch and what is an unsafe touch. I take this opportunity to request the Education Department, the Directorate of Education, to have recurring sessions as one of this kind so that the secrecy and shame associated with the child abuse, which inhibits its discovery and discourages voluntarily reporting, gives away to uninhibited exposes about child sexual abuse and exploitation. I also request the schools to refrain from gendering the language of child sexual abuse and to go into normative use of ungendered language of child sexual abuse. I say so for the reason that young boys are as vulnerable to child sex abuse as young girls. I also request the schools to extend all possible support to children who have experienced sexual abuse and to take steps to assuage their feelings of guilt and psychological distress emanating from feelings of betrayal and confusion about the child's role in precipitating the abuse and report such instances to the police immediately. We have to be the light in the dark tunnel and help the children navigate the way out of sexual abuse. We have to be sentimental, safeguarding them against sexual exploitation. We have to ask this question, powerful question to ourselves: if not now, then when? If not us, then who? This year we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. And I'll request each and every child to go back to their house and tell their parents to bring a national flag to their home so that on 15th of August, हर घर में तिरंगा फहराना है. आप लोग हर घर में तिरंगा फहराएंगे? हाथ उठा के ताली बजाइए. Because these are the future prime ministers, future presidents, future generals, future chief justices, and they're the future of the country. मेरा आपसे यही अनुरोध है, घर जाइए, तिरंगा खरीदिए, तिरंगा फहराइए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए. थैंक यू, गॉड ब्लेस, जय हिंद. लॉर्डशिप, आपका बहुत बहुत आभार. आपके संबोधन को सुनकर हम सबका हौसला निश्चय ही बुलंद हुआ है और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों के मन में यह विश्वास जागा है. एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए. अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशियाँ पर हक हमारा भी तो है. एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलिस्तां पर हक हमारा भी तो है. On this note, I would like to call upon Shri Surendra Kumar, the Law Officer MCD, to hand over a potted plant to our team leader, Shri Bharat Parashar ji, Member Secretary DALSA, who's led us from the front and guided us at every crucial juncture.
I would now like to call upon Shri Sumit Anand, Learned Additional Secretary, Delhi State Legal Services Authority, and Ms. Isha Singh, Secretary, Southeast District Legal Services Authority, to present a memento to Bharat sir. With this, I now call upon our Special Secretary, Delhi State Legal Services Authority, Shri Sushant Changotra, to deliver the vote of thanks. Good morning to all the dignitaries present on the dais and off the dais as well. I consider it to be my proud privilege to express gratitude on behalf of Delhi State Legal Services Authority to this august gathering on the culmination ceremony of Conversations on Touch, Caring and Protecting Tender Hearts. Every child is an embodiment of hope, a hope that every child will be protected and will have a congenial atmosphere which will enable the children to realize their potential. We all know that children are foundation of a nation, and strength of a nation lies in a healthy, protected, educated and well-developed youth population. To put this sentiment into action under the able leadership of esteemed Patron-in-Chief, Honorable Mr. Justice Satish Chandra Sharma, the Chief Justice, High Court of Delhi, and guidance as well as encouragement of Executive Chairperson, Honorable Mr. Justice Siddharth Mridul, Judge, High Court of Delhi, Delhi State Legal Services Authority, initiated this project. In this project, through installation of information boards in school premises, distribution of jute bags containing description of legal services institutions, and by conducting interactive sessions on good touch, bad touch, POXO and cyber offenses, we endeavored to reach out to little stars through innovative methods. It is extremely imperative that adolescents are aware of what constitutes good touch and bad touch and are properly guided about the ways to protect themselves and also to raise voice against such wrongs. During this project, DSLSA was able to reach students of 150 schools, and the results are heartwarming. We intend to reach out to more students in other schools as guided by our Lordship. It is our good fortune to have amongst us distinguished presence of Honorable Mr. Justice Satish Chandra Sharma, the Chief Justice, High Court of Delhi and Patron-in-Chief, DSLSA in today's program. His Lordship's special address is unique and inspirational as always. We thank you, sir, for enlightening our path. Sir, your presence today in this program has reinvigorated the spirit of the entire team of DSLSA to work even harder in achieving the holy mandate of access to justice for all. Sir, I once again thank you for enlightening and motivating address. Sir, your words of wisdom are lighthouse for us in this journey of legal aid, and sir, with all humility, we assure you that we will put our best foot forward to carry out the vision set out by your good self. Sir, we are immensely fortunate and blessed to be led by a compassionate and a visionary like your good self. We always look up to you for inspiration in doing our work. I take this opportunity to express our most sincere thanks to Honorable Mr. Justice Siddharth Mridul, Judge, High Court of Delhi and Executive Chairperson of DSLSA for gracing this occasion. I express my deep gratitude on behalf of DSLSA to Honorable Mr. Justice Siddharth Mridul for constant and unflinching guidance, inspiration and encouragement, not only in this project, but in all our endeavors. Sir, we always look up to you for inspiration in carrying out the mandate of DSLSA. I also extend deepest gratitude to Honorable Judges of the High Court of Delhi who have graced this program by their esteemed presence. Sir, ma'am, your presence has infused new energy in us, and presence of your good self is deeply inspiring and encouraging for all of us. We once again thank you to spare your valuable time for inspiring, encouraging and motivating us. Thank you. I must thank all learned principal, district and session judges who are also the chairpersons of respective district legal services authorities for their continuous support in carrying out this project and all other projects of DLSA. DLSA is a ground force of legal aid institution, and in Delhi, with continuous support of learned chairpersons, DSLSA is able to carry out the mandate to ensure access to justice for all. I sincerely thank you all, ma'am and sirs.
State legal services authorities are chaired by the member secretary of said authority, and to redeem the constitutional obligation of access to justice for all, besides sharp legal aid acumen, compassion, and sensitivity, is justice for all, is also very much required. We are fortunate to have Shri Bharat Prashar at the helm of affairs of DSLSA. DLSA's rumination to reach out to the last man standing through innovative ideas originates from Bharat Sir's compassion, wisdom, and sensitivity. This project is also the brainchild of our learned member secretary, Shri Bharat Prashar. Sir, I express my sincere gratitude for being the catalyst that stimulates and encourages all of us to do our best. I thank Learned Registrar General and Learned Registrar Vigilance High Court of Delhi and Learned Director Academics, Delhi Judicial Academy for their august presence and constant support. This program wouldn't have been possible without immense contribution of Mr. Ashwini Kumar, Special Officer MCD, Mr. Ganesh Bharti, Commissioner MCD, Mr. Vikas Tripathi, Director Education MCD, Director of Media MCD, Director of Horticulture Department of MCD. I also pay regards to Mr. Anil Kumar Sharma, Chief Legal Officer, and his team of law officers and panel advocates. I also thank Mr. Rakesh Jha, Executive Engineer of MCD, and the members of his team for their active cooperation. I thank Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, headed by its Director, Mr. Himanshu Gupta, who has been constantly supportive of all DLSA's endeavors. It is because of the support lent by MCD and Department of Education that DSLSA reached out to a larger nexus of schools in Delhi. We look forward to more such collaborations with Department of Education and MCD to make our Delhi a safer city. I also extend thanks to all the respective secretaries of district legal services authorities for their tireless efforts to ensure that this project is nothing but a splendid success. I congratulate them all for carrying out this project so well. Ever energetic secretaries are the foot soldiers and strength of legal aid institutions, and we thank them for putting their best and sincere efforts to reach out to the last man standing. I must express special thanks to specially trained task force of legal aid councils and paralegal volunteers. The success and strength of legal aid institutions is measured by the commitment of legal aid councils and paralegal volunteers. I proudly say that in Delhi, we have a team of efficient and committed legal aid councils and paralegal volunteers. I thank each one of you for your efforts in making this program a success. I also take this opportunity to thank all the learned judicial officers who had volunteered to be the resource persons for this project as well. I would extend thanks to principals of all schools, school authorities, and teachers for their enormous cooperation. I must extend a hearty and special thanks to all the children and the participants who gave such wonderful performances today. I must express my thanks to all the children who have participated in interactive sessions, who are present today, and who have heard the sessions intently. I also express my thanks to all the teachers and students who have joined this session on YouTube. I also thankful to the members of media for disseminating information about our program in vernacular languages for the benefit of children. I have been fortunate enough to be backed by a team of dedicated legal literacy program, procurement team, and IT team at DSLSA who have been working beyond the call of duty to make this program a huge success. I thank all the staff members of Delhi State Legal Services Authority, Delhi Legal Services Authorities, and MCD for making such wonderful arrangements for today's culmination ceremony. I am reminded of words of Nelson Mandela. I quote, "There can be no keener revelation of society's soul than the way in which it treats its children." The project was aimed to ensure that children are raised in a safer society, and I sincerely hope that we have been able to make a difference. I once again thank one and all who have joined us today for the program. I request and expect continued support of all for furthering the motto of Vishwas Sabke Liye, Nyay Sabke Liye. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. The curtains would soon be falling on today's program. पर उसके पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब राष्ट्रगान को सम्मान देने हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात
आप सभी से निवेदन है कि हमारे डिग्नेटरीज के प्रस्थान करने तक आप अपने अपने सीट्स पर ही मौजूद रहें। थैंक यू सो मच। वो तो आप ही कर सकते हो, मेरी पास मुझे लगता है वो हाथ रुक गए या तालियां रुक गई। जरा हाथ उठाकर एक बार पूरी टीम और सबके लिए तालियों की जोरदार आवाज, क्योंकि हिप हिप आवाज तो आई नहीं। हिप 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 हिप। जरा हाथ उठाइए और ताली बजाइए और अपनी तरफ से सारी टीम का थैंक यू करिए। सबका धन्यवाद, मन की गहराइयों से धन्यवाद। शायद धन्यवाद के लिए आज शब्द कम हैं। जरा तालियां फिर से जोरदार हाथ उठाकर, और अगले 20 सेकंड तक जरा बजाइए जोरदार। बाहर बारिश और अंदर तालियों की बारिश, खूबसूरत एहसास। सबने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो तालियों से उनका थैंक यू करिए। और एक बार वो वाली ताली बजाइए जो हम अक्सर स्कूल्स में बजाते हैं। 1 2। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बजाते रहिए, एंजॉय करिए इन तालियों को। अपने लिए भी बजाइए। कितना खूबसूरत आपने ये प्रोग्राम बना दिया। अगर आप नहीं तो कुछ नहीं, तो अपने लिए अब ताली बजाइए, जोर से बजाइए, सेल्फ पैडिंग करिए। बहुत अच्छे बच्चे और पूरी टीम जो ऊपर से भी जा रही है। बच्चों से एक अनुरोध है, थोड़ी देर आप अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। जरा बैठकर हाथ उठाइए, मुझे पता लगे कि आप वहां पर हैं जहां हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। पूरा खींच के हाथ उठाओ ना। हाथ के आधा आधा घर में छोड़ आते हैं और आधा आधा यहाँ लेकर आते हैं। अब जरा दोनों हाथों को मिलाओ और जरा अपने लिए बजाओ एक बार। जितनी देर बजा सकते हो, तुम्हें टाइम दिया, बजाओ। अब किसी के लिए नहीं बजाना, सिर्फ अपने लिए। और जरा अपने लिए हुर्रे करो, हिप हिप। मेरे तक तो आवाज ही नहीं आई, तुम तो मुझसे कई 100 गुना ज्यादा हो। जरा जोर से बोलना, हिप 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 हिप। हर एक प्रोग्राम को करने का एक तरीका होता है। जब तक वो लोग जो हमारे लिए आए होते हैं अपने अपनी जगह पर पहुंच नहीं जाते, तब तक एक तरीका होता है, हम अपनी जगह पर बैठें। क्या करें अपनी जगह पर? यार तुम्हें तो सब कुछ आता है, इसीलिए तो कहती हूं कैसे बच्चे। सुनाई नहीं, किसी को सुनाई दिए? और ये जो इतने सारे बैठे हैं ये अच्छे नहीं है? जरा बताना अपने लिए, ताली बजा के बताओ कि तुम अच्छे हो कि नहीं हो। थैंक यू सो वेरी मच। आज दिल इतना इतना और इतना खुश हो गया। कितना खुश हो गया? जरा हाथ उठाकर बताओ आज दिल कितना खुश हुआ। नहीं दिख रहा, जरा जोर से बोलो, कितना? सच में नहीं सुनाई दिया। कितना? क्या खुश हुआ? बिल दिया किसी ने तुम्हें? क्या खुश हुआ? किसका खुश हुआ? क्यों हुआ? अगले 2 मिनट में बस ये सीखेंगे। जब तक पीछे के दरवाजे बंद होंगे, एक एक करके सब लोगों को नीचे निकालने का प्रबंध होगा, तब तक सिर्फ हम 2 मिनट में वही सब सीखेंगे। सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? वैसे तुम्हें सब कुछ आता है कि नहीं आता? सुना ही नहीं। आता है कि जाता है? सब आता है तुम्हें, पर फिर भी 2 मिनट। किसको दोगे 2 मिनट? ये वाली मैम को। तो मेरे लिए पहले ताली बजाओ। इतने धीरे बजाओगे? जोर से बजाओ ना मेरे लिए। यस। पहली चीज, नंबर है 10
9 8 क्या नंबर है? फिर से बोलो। दूसरा नंबर 15 16 क्या नंबर है? क्या नंबर है? सुना ही नहीं, क्या नंबर है? यस, ये 2 नंबर याद रख के जाने हैं। इसके अलावा एक तीसरी चीज, अगर आप किसी बड़े को बताते हैं और अगर वो बड़ा आपकी मदद नहीं करता तो न्यायपालिका उसे भी दंड देती है। अपने घर में बड़ों को बताइए कि अगर कोई ऐसी चीज आपके साथ घटती है तो वो भी किसको बताएंगे? यस, और सब नहीं उठेंगे। पहला प्रॉमिस ये था कि एक एक करके एक एक जोन को भेजेंगे। अगर आपको मैं अच्छी नहीं लग रही तो उठ जाइए सबके सब, और अच्छी लग रही हो तो वहीं से पहले ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। आपने सीढ़ियों से जाना है। किससे जाना है? अब अगर बहुत सारे लोग सीढ़ियों पे उतरते हैं तो क्या खतरा बढ़ता है? मैंने सुना ही नहीं, क्या खतरा बढ़ता है? गिरने का। तो गिरेंगे तो उसके लिए कुर्सियों से कैसे जाएंगे? सीढ़ियों से आराम से। कैसे जाएंगे? यस, तो 2 बारी जब तक जो बैठे हैं वो नंबर दोहराएंगे। पहला नंबर क्या था? मैंने नहीं सुना, क्या था? 10 9 8 1 0 9 8। और दूसरा नंबर क्या है? 1 5 1 6। बोलो। 15 16 याद हो गया? तो अपने लिए ताली बजाओ, तुम्हें तो सब कुछ याद हो जाता है। और अगर कोई तुम्हारे साथ बैड टच या अनसेफ टच करेगा तो क्या करोगे? यस, शाउट करोगे और बोलोगे। शाउट करोगे और मैंने सुना ही नहीं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे? यस करके बताओ, बोलोगे? यस, यू हैव टू स्पीक। आप नहीं बोलेंगे तो कल वो दूसरे बच्चे के साथ वही गलत व्यवहार करेगा। इसलिए आप यस बोलिए, और अपने लिए बोलना सीखिए। किसी और के लिए बोलिए चाहे मत बोलिए, लेकिन सबसे पहले किसके लिए बोलिए? अपने लिए बोलिए। तो एक बार सभी जितने बच्चे यहां बैठे हैं वो अपने लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि अब वो अपने लिए बोलेंगे। और दूसरी बात जो सर ने सिखाई, अपने दोस्तों को स्कूल में जाकर सारी बात, मुझे नहीं लगता आप बताएंगे, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। बताएंगे? किसको बताएंगे? और दोस्तों को, और पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, किसको बताएंगे? और हम आज के